Hello students, I welcome you all to Educrat IAS Academy's initiative Edu-Samiksha, wherein we will be discussing some news with respect to UPSC prelims and mains perspective for the date 17 September 2025. So let us start with our discussion. The first topic that we're going to take up is Anticipatory Bail and the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. This we're going to discuss with respect to safeguarding social justice and dignity of vulnerable communities. तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में सदियों से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है एंड दिस स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द डीपेस्ट सोशल चैलेंजेस। अब इसको कर्ब करने के लिए पार्लियामेंट ने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को एनेक्ट किया, पर इसमें एक प्रोविजन है विच इज सेक्शन 18। अब सेक्शन 18 क्या करता है? इट बार्स एंटीसिपेटरी बेल फॉर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। मतलब अगर आप इस एक्ट के अंडर अगर कोई क्राइम करते हो तो सेक्शन 18 विल बार द एंटीसिपेटरी बेल। तो हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इन द रीसेंट रूलिंग इन किरण वर्सेस राजकुमार जीवराज जैन it reaffirmed this bar and setting aside Bombay High Court order that granted a pre-arrest bail in caste-based assault case। अब इस जजमेंट के ऊपर, इस केस के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ रीअफर्मिंग दिस बार हैज बैलेंस्ड द इंडिविजुअल लिबर्टी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ सोशल जस्टिस। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या है? सो इसका मतलब यह है कि इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अरेस्ट अगेन granted in anticipation of being accused under section 438 CRPC, अब जो कि अभी चेंज होके 482 BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर आ गया है। मतलब बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल अगर आप लेते हो सो इट विल बेसिकली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अरेस्ट। पर्पस क्या है? टू सेफगार्ड पर्सनल लिबर्टी एंड इट विल प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ अरेस्ट पावर्स। बट इन द SC/ST एक्ट में क्या है? दिस सेक्शन 18 इट इज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडिंग द एप्लीकेशन, जहां पे इन द फर्स्ट इंप्रेशन में क्या लग रहा है कि हाँ अगर कोई एट्रोसिटीज SC/ST के अगेंस्ट हुई है देन देयर विल बी नो एंटीसिपेटरी बेल। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट अस मूव। नाउ व्हाई एंटीसिपेटरी बेल इज बार्ड इन SC/ST केसेस? क्या रीजन है? पहला रीजन है इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटिमिडेशन। जैसे देखिए, विक्टिम्स एंड विटनेसेस आर मोस्टली फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो एंटीसिपेटरी बेल अगर मिल जाता है देन इट मे अलाउ द अक्यूज्ड पर्सन टू थ्रेटन और इन्फ्लुएंस देम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव इंटेंट। सो व्हाट इज द लेजिस्लेटिव इंटेंट? द पार्लियामेंट कॉन्शियसली इंसर्टेड सेक्शन 18 ताकि टू एंश्योर दैट अनहिंडर्ड प्रोसिक्यूशन ऑफ कास्ट क्राइम्स। तो it basically ensured the unhindered prosecution of caste crimes। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट। अब पहले कौन कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 18 को अपहेल्ड किया है? फर्स्ट वन इज राम कृष्ण बलोथिया इन 1995। इसमें क्या किया? Supreme Court upheld the constitutional validity of Section 18. Then again in Vilas Pawar in 2012 case, it again reiterated that anticipatory bail cannot be granted once a prima facie case exists. Next, पृथ्वी राज चौहान in 2020, उसमें उस केस में क्या हुआ कि कोर्ट क्लैरिफाइड दैट it must not go into a mini trial at the bail stage। bail stage में ये mini trial में नहीं जाना चाहिए। alright, now अब ये केस क्या है? अब क्या हुआ कि one scheduled caste individual, what happened to that individual, that person basically complained कि उनके अगेंस्ट में कास्ट अब्यूज एंड फिजिकल असॉल्ट हुआ है, and that too during assembly elections in 2024। अब इसमें क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने तो एंटीसिपेटरी बेल डिनाई कर दिया, पर
बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया, इट ओवर रूल्ड एंड ग्रांटेड बेल. क्यों? क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट सेड दैट इट इज बेसिकली अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस. अब सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सेक्शन 18 को रीइंस्टेट किया एंड कैंसल्ड द एंटिसिपेटरी बेल दैट बॉम्बे हाई कोर्ट granted. All right, then it again held that electoral retaliation against SC/ST voters, it falls within section 310, and also it observed that insults in public view can attract section 31R. Apart from this, Supreme Court also cautioned high courts that it should that it should not conduct mini trials at bail stage. So these are the rulings that Supreme Court has invoked. Now, what are the key features of SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989? So the first key feature is the application is wide. It covers a lot of offenses जैसे कि कास्ट बेस्ड स्लर्स हो गया, फिजिकल वायलेंस हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट्स, लैंड एलिनेशन एंड डिनायल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज. अलग से कुछ और प्रोविजंस मेंशन किए जैसे स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल, देन विटनेस एंड विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम्स, देन कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन पैकेजेस आर आल्सो बीइंग इन्वोक्ड. Amendments. Now this act has been amended in 2015 and 2018. अब उसमें क्या हुआ? The offenses were expanded, like obstructing voting rights, garlanding with footwear. These are also included in the offenses. अब this also strengthened accountability of public servants for negligence in duty. Next is कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल जस्टिस डायमेंशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में कुछ डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज आर्टिकल 14. व्हाट आर्टिकल 14 says? इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो SC/ST एक्ट्स क्रिएट्स अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल ग्रुप्स. सेकंड वन इज आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. सो इट ऑल्सो अगेन reinforces the constitutional mandate against caste discrimination. Then Article 21, right to life and dignity. It also protects the dignity of SC/ST individuals. Democratic rights. Now democratic rights क्या बोलता है कि electoral retaliation against Dalits undermines the free and fair elections. All right. Now, what all are the criticisms and concerns? First one is misuse concerns. So what critics are saying that this can allege political or false cases. This will also lead to the increasing number of false cases. Judicial dilemma. अब जुडिशियरी में क्या क्या डायलेमा है? जैसे they need to balance prevention of misuse with protection of victim dignity. 2018 में dilution and reversal में क्या हुआ कि Subhas Kasinath Mahajan allowed preliminary inquiry and this overturned by 2018 amendment which restored the strict implication or strict provisions of the act. Next is, what is the significance of this 2025 ruling? So the first significance is it is reaffirming the strict barrier. That means what? It is basically strengthening the deterrent value of the act. Next is प्रिवेंट जुडिशियल ओवररीच. अब ये जुडिशियल ओवररीच को प्रिवेंट कर रहा है. कैसे? हाई कोर्ट्स कैन नॉट डाइल्यूट लेजिस्लेटिव इंटेंट बाय ट्रीटिंग FIRs एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो हमने बॉम्बे हाई कोर्ट के केस में अभी देखा है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी. हाउ इट इज प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी? बाय रिकॉग्नाइजिंग कास्ट बेस्ड कोएर्सन इन इलेक्शंस एज अ ग्रेव ऑफेंस. Then constitutional backing, it is basically confirming the validity of section 18 under article 14 and 21. So yes, section 18 is coming under article 14 and 21. Next is what could be the way forward. So strict enforcement, we need to
enforce the act very strictly so that impartial action can be taken against the atrocities. Then we need to sensitize police as well as judiciary on caste-based cases. Then again, we need to balance the victims, and also at the same time, we also need to ensure that false cases are not being registered. Apart from this, we also need to support for strong compensation, rehabilitation, and witness protection. All right. So with this, let us see one mains question. So what the question is saying, Section 18 of the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989, bearing anticipatory bail is a constitutional safeguard rather than a limitation of liberty. Discuss in the light of recent Supreme Court judgments. So you can attempt this question and write the answer framework in the comment box. Let us move to the next topic for the day. So the second topic that we're going to take up is why the Himalayas receive heavy rainfall, and this we're going to understand with respect to science, risks, and climate change linkages. Now, Himalayas are basically known as the water towers, but in recent time, increasing incidents of cloudburst, flash floods, and extreme rains are being witnessed in states like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Ladakh, and other Himalayan regions. But monsoon rains are seasonal, right? They are seasonal, but the intensity, जिस intensity में ये increase हो रही है, frequency and unpredictability, it is basically reflecting the impact of geography, monsoon dynamics, and climate change. All right. Now, let us move to the next part. So, we will going to understand the orographic and meteorological factors. Now, orographic, what is the meaning of this orographic? This means mountain or related to mountains. All right. So, अब क्या होता है कि let's suppose these are the mountains. Now, ये cloud है, and this cloud, when it is in the lower level, it is warm and moist. अब ये cloud पहाड़ों से टकराता है and this goes up. अब जैसे ही वो ऊपर जाता है, it loses its intensity and it becomes colder. अब जैसे ही वो ठंडा होता है तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होने लगती है and it starts raining. So this is basically the phenomenon of orographic effect. तो क्या हो रहा है कि monsoon winds are getting attracted from Bay of Bengal and Arabian Sea and hit the Himalayas. अब जैसे वो हिमालय को हिट करता है, then it is forced to rise sharply. While rising, the air cools up and it condenses, and this produces intense local rain, right? So जैसा कि हमने एग्जाम्पल, जैसा कि हमने रिसेंटली देखा है कि उधमपुर JNK में it recorded 630 millimeter in 24 hours, right? And this is equal to Rajkot's annual rainfall. So can you imagine the intensity of rain that has happened in Udhampur, right? Okay. Now steep slopes and narrow valleys. अब फ्लड प्लेन्स जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में क्या है कि फ्लड प्लेन्स आर वाइड, सो इफ द रेन इज हैपनिंग देन इट इज गेटिंग स्प्रेड. बट माउंटेन्स में ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टीप स्लोप्स एंड नैरो वैलीज. तो यहाँ पे अगर रेन हो रही है देन इट इज बेसिकली pouring quickly in the downhill, and also the intensity of rainfall impact is much stronger as compared to the wide flood plains. तो इसी के वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? फ्लैश फ्लड्स एंड डेब्रीज फ्लोज, राइट? अब डेब्रीज फ्लोज हमने कहां देखा है? धराली विलेज रिसेंटली इन उत्तराखंड. नाउ हाई ऑल्टीट्यूड कन्वेक्शन. सो हाई ऑल्टीट्यूड कन्वेक्शन जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, दैट warm moist air at lower levels, it rises and cools upper layer and forming towering cumulonimbus clouds.
Now in the comment box, you're going to tell me how many type of clouds you know. All right. So what happens that when it goes upward, it forms towering cumulonimbus clouds, and this releases rainfall, and which is sudden and crowd bursts like episodes happen. All right. Now monsoon dynamics. So let us understand the monsoon dynamics. So बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है कि अभी फ्रीक्वेंटली लो प्रेशर एरियाज जनरेट हो रहे हैं, एंड दिस बेसिकली द मॉनसून इज moving to the northwestern region, into the northwestern part, into the Himalayan region. और इसी के वजह से in 2025 we have seen that there has been consecutive low pressure system, and it caused 34% surplus rainfall in August and 67% above normal rainfall in September in northwestern India. Now there is another factor which comes into play, which is western disturbances. Now what is happening that western disturbances, we all know that it originates in the Mediterranean region, and during the winter season it brings rain and snow in the North India, right? But climate change के वजह से क्या हो रहा है कि it is getting increasingly interacted with southwest monsoon currents, and because of this it is producing erratic heavy rainfall episodes in the Himalayas. All right. Next is we're going to understand why hilly regions face higher disaster risks. So first thing we all know, plains versus mountains. अब plains में क्या हो रहा है, the heavy rainfall is getting spread out and draining into rivers and wetlands, but mountains में ऐसा नहीं हो पा रहा है because of the steepness, and that causes landslide, mudslides and flash floods. डिजास्टर जैसे हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि इन मंडी एंड कुल्लू विच इज इन हिमाचल प्रदेश, फ्लैश फ्लड्स डिस्ट्रॉयड हाउसेस एंड रोड्स. Then again Tharali in Uttarakhand, we have seen that landslides buried villages. In Ladakh, we have seen that 59 millimeter in 2 days, and highest since 1973, and it caused major flash floods. River blockages जैसे ये लैंडस्लाइड क्या करती है कि it often chokes the river channels, and that lead to lake outburst and downstream flooding. All right. Now what is the role of the climate change? अब climate change का रोल क्या है? वार्मिंग एटमोस्फियर, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि वार्म क्लाउड्स हैज द हायर वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू द कोल्डर क्लाउड्स. सो अब क्या हो रहा है कि वार्म एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि more intense rainfall events. According to IPCC report, a 7% increase in moisture holding capacity per 1 degree Celsius. मतलब अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर राइज होता है, then there is an increase in the 7% moisture holding capacity, right? This you can quote in your mains answer writing or wherever it is needed. Then शिफ्टिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर इंटरैक्टिंग विद द मॉनसूनल विंड्स, एंड दिस लीड्स टू कोलाइडिंग एंड विथ मोर मॉनसून विंड्स दैट इज रिजल्टिंग इनटू एक्सट्रीम रेनफॉल एंड लॉन्ग ड्राई स्पेल्स. देन जेट स्ट्रीम वीकनिंग, because of melting of Arctic ice, jet streams are getting slowed, and because of this स्ट्रॉम्स एक ही जगह पे बहुत समय तक प्रेजेंट रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर सीइंग प्रोलॉन्ग्ड हेवी रेनफॉल, राइट? देन द सिमिलर ट्रेंड्स वी हैव सीन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 2010 फ्लड्स, जर्मनी इन 2021 फ्लड्स. देन हिमालयन वल्नरेबिलिटी, जैसे कि फ्रेजाइल जियोलॉजी हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, रैम्पेंट कंस्ट्रक्शंस, इट फर्दर worsening the climate driven rainfall extremes. All right. Next is why cloudbursts are happening in Himalayas. So क्या रीजन है? फर्स्ट इज जियोग्राफिक पोजीशन. जियोग्राफिक पोजीशन क्यों? क्योंकि हिमालयस आर टर्म्ड विद द कन्वर्जेंस जोन ऑफ ट्रॉपिकल मॉनसूनल विंड्स एंड मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज. नेक्स्ट इज रैपिड अपलिफ्ट ऑफ मॉइस्ट एयर, जो कि हम लोगों ने पहले देखा है.
that steep slopes are accelerating the cooling, and this triggers sudden and intense downpours in smaller areas. Climate change intensification, warm air, we all know that it contains higher moisture loading but slower storms, and it results into rainfall persist over the same area for a longer period of time. Next is observation and forecasting challenges. So, क्या हम लोगों ने देखा and what all are the limitations or the challenges. So, first tool that we are using is Doppler weather radars. These are highly detailed, but क्या है? Poor mountain coverage, right? So, this is one of the limitations. Then rain gauges and AWS. So, these are precise but rugged areas में बहुत ही कम है. These are too few in rugged areas. Then satellites, INSAT, 3D, 3DR, GPM. These are good for larger storms, but low resolution for local cloud bursts, right? Other limitations, rugged terrain, it leads to the blockades of radar beams. Radar beam को ये block कर देते हैं. Then short duration of cloud burst, which is less than 1 hour, this is very limited warning time. All right. So, what is the broader implications of this? First is disaster management. So, State Disaster Management Authority, it should strengthen early warning system, evacuation and resilient infrastructure needs to be developed. Sustainable development. We need to strictly regulate the construction, deforestation and riverbed mining in eco-sensitive zones. Right? Then apart from this, we also need to promote the eco-sensitive zoning and slope stabilization projects. Now, from policy angle, NDMA's guidelines on landslides and floods need region-specific execution. It should vary from region to region, catering to the local needs. Then Himalayan states also should require dedicated climate adaptation funds. All right. Now, with this, let us see one main question. So the question says, extreme rainfalls in the Himalayas is no longer a rare event but a new climate reality. Examine the reasons behind heavy rains in the Himalayan region and suggest policy measures to mitigate disaster risks. So you can attempt this question and write the answer in the comment box. All right. Now let us move to the third topic for the day. So the third topic that we're going to discuss is the hidden human cost of artificial intelligence. Now, artificial intelligence, we all are using artificial intelligence today, right? And the uses varies from sector to sector. जैसे कि first जैसे हम लोग health care sector में हम लोग artificial intelligence use कर रहे हैं. Financial sector में भी जैसे for example fraud trading हो गया, then fraud detection हो गया, then trading हो गया, right? Then in transportation sector उसमें self driving cars. Then apart from this, in education sector, adaptive learning that we have already discussed in our previous classes. Then we have also made recently, there is a trend going on of Ghibli art. Then again recently Gemini Nano Banana AI app. It is taking the images of people and and refining it. So all these areas, because of the use of AI in all this area, it is celebrated as the cornerstone of automated economy, right? जैसे chatbots to self-driving cars and voice assistants, AI is seen to be very fast, accurate and efficient. पर इस शाइनी फसाड के पीछे भी एक वर्कफोर्स है जो कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, राइट? एंड these are often termed as ghost work, and it is coming with a hidden cost in terms of low wages, exploitation and severe mental stress, right? So why human labor is central to artificial intelligence? अब artificial intelligence में ये human labor क्यों important है? देखिए, so AI cannot understand on its own. It needs human guidance to teach them and to tell them what this data actually means, right?
सो फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा एनोटेशन में क्या है कि ह्यूमन लेवल images, videos and text. And for example, like tagging whether a picture contains an act or identifying traffic signs for self-driving cars, right? Humans need to show the artificial intelligence or the machine that these all are the images that are showing the traffic signs or self-driving cars. This is the way of teaching. Like this is how we teach AI to differentiate between things. Then language models जैसे कि large language models जैसे chat GPT हो गया, Gemini हो गया, it requires humans intervention to correct errors, remove biasness and fine tune outputs. Then content moderation, सोशल मीडिया जैसे ऑटो फिल्टर्स जो सोशल मीडिया में यूज होता है, इट हाईली रिलाई ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन हु मैनुअली लेबल हार्मफुल कंटेंट्स जैसे हेट स्पीच, न्यूडिटी और वायलेंस. सो ह्यूमन वर्कर्स आर साइलेंटली powering the artificial intelligence revolution. All right. Now areas of human development. तो एरियाज कौन कौन से, जैसे डेटा लेबलिंग. नाउ मशीन्स कैन नॉट डिटेक्ट कलर्स और अदर इमोशंस अनलेस एक्सप्लिसिटली लेबल्ड. सो ह्यूमन कैन recognize the color yellow but machine cannot. So humans need to teach AI that to recognize the color yellow, thousands of images are annotated by humans. Then self-driving cars. AI uses video footage leveled by humans to distinguish between pedestrians, vehicles and signals. Content moderation. So human moderators sift through disturbing images and texts to make platform safe. So there is human intervention at all level. Then again voice and audio training. जैसे एक्टर्स जो कि हम देखते हैं कि दे रिकॉर्ड साउंड एंड मूवमेंट्स ऑफ एआई that voice and avatar feels, so that the voices and avatar feels real. जैसे कि हम लोगों ने अवतार मूवी में भी यही देखा था, राइट. तो ह्यूमन कॉस्ट क्या क्या है इसके पीछे. फर्स्ट वन इज लो वेजेस एंड जॉब इनसिक्योरिटी. जैसे वर्कर्स इन मोस्टली इन द डेवलपिंग कंट्रीज जैसे केनिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड फिलीपींस, दे आर अर्निंग लेस देन $2 per hour and which is far below the industrial level, right? They are employed through intermediary gig platforms and that makes the working fragmented as well as insecure. Then there is huge exploitation and lack of rights. Many workers are unaware of which big tech company they are actually working for. क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग होता है. So workers are not able to they did not get a chance to know for which big tech company they are working. Then जब भी ये यूनियन बनाने का अटेम्प्ट होता है, they are heavily crushed and the contracts are terminated if the worker raise concerns. Then their labor rights remain unprotected. क्यों? क्योंकि आउटसोर्सिंग हो रहा है एंड सबकॉन्ट्रैक्टिंग की वजह से the labor rights are also getting unprotected. मेंटल हेल्थ इंपैक्ट्स क्या क्या पड़ रहे हैं. एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कंटेंट जैसे कि पोर्नोग्राफी, वायलेंस एंड बीहेडिंग, इट कैन कॉज पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन एंड एंजाइटी. Then apart from this, the strict deadlines and constant digital surveillance add to the workplace stress. अब मॉडर्न डे डिजिटल स्लेवरी क्या है. 2024 में कुछ केनियन वर्कर्स ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एक लेटर लिखा था जहां पे वो डिस्क्राइब कर रहे थे अबाउट देयर वर्किंग कंडीशंस एंड दे टर्म्ड दिस एज मॉडर्न डे स्लेवरी. Right, they termed this as modern day slavery, and in that they highlighted that AI companies are exploiting the loopholes in the global labor laws and justice system to keep the cost low. All right. Now automated but not truly autonomous. जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि AI
AI is often termed as fully automated, but at every level it needs human intervention, right? तो जैसे एग्जाम्पल क्या है कि जैसे सोशल मीडिया फीड्स आर ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड ओनली बिकॉज ह्यूमंस हैव प्री लेवल्ड व्हाट काउंट्स एज सेंसिटिव और हार्मफुल. अगर ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू अगर ये प्री लेवल्ड नहीं होता है, देन एआई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. Children are also sometimes engaged in repetitive AI training tasks. Then ethical and governance concern क्या है? First one is transparency deficit. क्यों? क्योंकि awareness की कमी है, and because of this and awareness की किस सेक्टर में कमी है, about who does the work and under what condition. Labor rights violation जैसे there is no minimum wage protection, no job security and no unionization. Mental health neglect. Now, no safeguard for those exposed to disturbing online content. Global inequality भी है. Global inequality जैसे there has been exploitation and there has been a exploitation disproportionately affect workers in mainly in the developing countries, while profits कहां पर जाती है? To the giants in the global north. All right. Now, what could be the way forward? So, what we need to do, we need to balance innovation with human dignity. We need to enforce strict regulation of standards with respect to the digital labor, and we should also ensure fair wages, job security, and dignity of work. There has to be a transparency. Transparency मतलब जैसे big tech companies should disclose their supply chains of digital labor. वर्कर प्रोटेक्शन जैसे मेंटल हेल्थ सपोर्ट हो गया, काउंसलिंग हो गया, रीजनेबल वर्क डेडलाइंस आर एसेंशियल. एथिकल एआई डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकर्स मस्ट ट्रीट डेटा लेवलिंग एंड एनोटेशन एज लेजिटिमेट वर्क, ना कि घोस्ट वर्क, राइट. देन ग्लोबल लेबर गवर्नेंस, in aligning with climate agreements, we should also come with global labor governance that should protect the labor rights and in the global world. So how can we conclude? AI is not just about algorithms or innovations, but AI क्या है? It is equally about the invisible human labor that is working tirelessly day and night. तो AI तो एक तरफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो ला रही है, बट इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इनसिक्योरिटी एंड ह्यूमन सफरिंग. अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया कैन पोजिशन इटसेल्फ एज अ हब फॉर AI डेवलपमेंट बाय सेफगार्डिंग द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ द डिजिटल वर्कर्स in the AI domain. All right. So with this, let us see one main question. The question says, artificial intelligence is often celebrated as the hallmark of the automated economy. Yet its efficiency is built on the invisible labor of low-paid workers in developing countries. Critically examine the hidden human cost of AI and suggest measures to ensure ethical and fair practice in digital labor. So you can attempt this question and write it in the comment box. All right, let's see some prelims pointer. So the first prelims pointer that we're going to talk about is Sabrimala temple. It is located in Pathanamthitta in Kerala, which is in Western Ghats and within the dense forest of the Periyar Tiger Reserve. On map, if it is visible, this is Sabrimala, right? This location is Sabrimala. अब deity कौन है? Lord Ayyappa, and he is also known as Hariharaputra. It is situated on the banks of Pamba River. अब Pamba River कहाँ पे जाती है? Pamba River drains into Vembanad Lake. Vembanad Lake, if you remember, we have already discussed in the last week. So in the comment box, you're going to tell me some of the features that we have discussed with respect to Vembanad Lake. Now, tradition क्या है? It is open to all castes and religion, and it traditionally barred entry of women aged 10 to 50 years, जो कि reproductive age में आती है. But Supreme Court in 2018 struck down this
इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक्ट में. Alright. Now, what is the significance? It is declared as a global pilgrimage center by Travancore Devasam Board. Travancore Devasam Board ने declare किया it is a global pilgrimage center and that is why it attracts devotees from across India. Recent issues जैसे political controversies on women's entry, then communal mobilization and temple development are some of the recent issues that are going on. Now the next topic is Raj Gonds. These are communities, these are subgroups of Gonds and it is one of the largest tribal groups. Location कहाँ पर है? In Madhya Pradesh and also in Chhattisgarh, Maharashtra, Telangana, etc. Language क्या है? इनकी लैंग्वेज गोंडी है जो कि द्रविडियन फैमिली से एंड दिस इज मोस्टली अनरिटन. फूड क्या है? द स्टेपल फूड इज कोडो एंड कुटकी मिलेट एंड राइस दे हैव ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. बिलीफ सिस्टम, वर्शिप नेचर. नाउ दिस वर्शिपिंग नेचर हैज अ टर्म व्हिच वी हैव डिस्कस्ड in the last class. So in the comment box you're going to tell me what is that term, right? What do we call worshipping nature? Earth, water, air ruled by gods. Status क्या है? इन लोगों को status क्या मिला? Scheduled tribes. Next is Almaty Dam. Almaty Dam क्यों न्यूज में? क्योंकि the height is क्योंकि हाइट बढ़ाने की बात चल रही है, राइट? बट रिवर किस रिवर के ऊपर है? बिल्ट अक्रॉस कृष्णा रिवर. लोकेशन कहां पर है? कर्नाटका, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में. पर्पस किस पर्पस से बनाया गया? फॉर इरिगेशन पर्पस. डिस्प्यूट इट इज लिंक्ड टू कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एलोकेशंस. इंपैक्ट क्या है? सबमर्जेंस ऑफ लैंड, देन कंपेंसेशन इश्यूज फॉर डिस्प्लेस्ड फार्मर्स. द लोकेशन इज ओवर हियर in Karnataka. Now the next topic is Khajuraho temples. Khajuraho temples कहां पर है? In Madhya Pradesh, Vindhya range में. These were being built in 1952 1050 AD by Chandela dynasty. Faiths Hindu and Jain temples. Architecture है Nagara style and it is also known for erotic and symbolic sculptures. UNESCO World status, UNESCO World Heritage कब मिला है? सिंस 1986. 1986 में खजुराहो टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है. फर्स्ट मेंशन किसमें किया गया? किसने किया? अल बेरूनी ने इन द ईयर 1022 एडी एंड लेटर ऑन इब्न बतूता ने भी किया था इन 1335 एडी में. अब खजुराहो टेम्पल्स की प्राइमरी रिवर कौन सी है? Cane River, which is a Yamuna tributary, and it is also famous for Rane Falls with granite canyons. Next is Sarnath. Sarnath कहां पर है? 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश. Importance, what is the importance? Site of Buddha's first sermon, जिसको हम लोग जानते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, which was around 528 BC, and it led to the beginning of बुद्धिस्ट संघ. मौर्यन पैट्रोनेज मिला है. अशोका बिल्ट स्तूपास, मोनास्ट्रीज, अशोकन पिलर्स विथ लाइन कैपिटल्स, जो कि हमारे इंडियन नेशनल एम्ब्लेम में है. देन की मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? धार्मिक स्तूपा इट मार्क्स सरमन साइट. देन चौखंडी स्तूपा, इट इज बेसिकली मीटिंग विथ फर्स्ट डिसाइपल्स. Ashokan pillar, which is the line capital, we all know. Then Mulaganda Kuti Vihar, which is modern monastery, and it was in 1931. It flourished during Gupta era, Buddhist art and monasteries. Then it declined in the post 12th century's invasions. Then it was again rediscovered in 18th century by Jagat Singh, right? Recent update क्या है? ASI is revising the plaque, crediting Jagat Singh instead of British, और ये अलाइन किससे कर रही है? Decolonizing narratives. UNESCO
This is on tentative list and we are hoping to get Sarnath as a UNESCO World Heritage soon. So let us look at some of the prelims question. So the question says, which of the following statements about Sabrimala temple is or are correct? It is located within the Periyar Tiger Reserve in Kerala. The temple is dedicated to Lord Ayappa, also known as Hariharaputra. The Pamba river, a tributary of the Periyar, flows adjacent to the temple. Next question. Consider the following statements regarding the Rajgons. They are a subgroup of Gonds, one of the largest tribal groups in India. Gondi language spoken by them belongs to the Dravidian family and is mostly unwritten. Their staple diet includes millets like kobo and kutki. They are classified as scheduled caste in central India. Which of the above statements is or are correct? 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 3 and 4. Next question. The Almaty Dam, which is part of Upper Krishna project, is built across which river and what is its primary purpose? Godavari River, hydroelectric power. Option B, Krishna River, irrigation. Option C, Kaveri River, flood control. Option D, Narmada River, drinking water supply. Next question. Which of the following statements about the Khajuraho temple is or are correct? They are constructed by the Chandela dynasty between 950 and 1050 AD. They are built in the Dravidian style of architecture. They are located on the banks of the Ken River in Madhya Pradesh. Both Hindu and Jain temples are present within the complex. 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4. Last question. Which of the following statements about Sarnath is or are correct? It is the site of Buddha's first sermon, marking the start of Buddhist Sangh. The Ashokan pillars at Sarnath with the lion capital is the inscription for India's national emblem. The Dhamek Stupa was built by Emperor Ashoka to commemorate Buddha's enlightenment. Sarnath flourished as a center of Buddhist art during the Gupta period. Options are 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4. So I encourage you all to write down the answer in the comment box. Alright. So with this, we come to an end for today's lecture. Please subscribe the channel and hit the like button. Have a nice day. Jai Hind.